So as you know, a computer is working in the three part. One is it is accept the input from the user, it is process the input and generate the output. The computer first कौन करिवो ना input टाको access करिवो, आमे डाटा टा आमे आनिबा, तापर आमे ताको process करिवा information टाको, तापर आमे output टा generate करिवा. एटा होची हमर कंप्यूटर रे काम. माने कंप्यूटर टा एक्चुअली हमर आईपीओ साइकिल रे काम करे. फास्ट से कौन करिवो यूजर थारो इनपुट नबो, आमे इनपुट कादरे दबा कीबोर्ड थ्रू रे दबा, तापरे हमर प्रोसेसिंग हबो का थ्रू रे ना सीपीयू रे प्रोसेसिंग हबो, तापरे हमको आउटपुट जनरेट करिवो थ्रू द मॉनिटर. मॉनिटर रे हमर आउटपुट टा जनरेट करिवो. दैट इज द basic phases where the computer is working. The computer basically it works, it is accept the input from user, it is process the input and generate the output. It is a actual work of your computer. The activity of computer can be broken down into the three phases. The computer ta three phases se broken down karibo. One is input, process and another is output. तो आमे जो कंप्यूटर रे जो काम करूचे ताको आमे तीनटा पार्ट रे डिवाइड करा होची. गोटे ताको कहआ होची आईपीओ, एक्सक्यूज मी, दैट इज कॉल्ड एज द आईपीओ साइकिल, इनपुट प्रोसेस एंड अनदर इज आउटपुट. आउ आमे जहां भी एप्लीकेशन आज यूज करूचे, एटीएम मशीन हो किबा हमर डिफरेंट यूपीआई ऐप हो, सब आईपीओ साइकिल थ्रू रे काम करूचे. जेमते कि आमे हमर लॉगिन आईडी दोचे, पासवर्ड दोचे. सो बेस्ड अपॉन द लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आमर इनफॉरमेशन टा वैलिडेट होची, देन से हमको आउटपुट टा जनरेट करूचे. द एक्टिविटी ऑफ ए कंप्यूटर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट. सो दैट इज कॉल्ड द आईपीओ साइकिल. आको हमें आईपीओ साइकिल बोली भी कहि परिबा. So it is generally represented in input, process, another is output. So a way रे हमरा represent करा जिवो. So let us perform the following exercise, like identify the input, process and output phases in the following tags, like calculating the sum of two number. So when you calculate the sum of two number using a calculator, first you add the number. मु प्रथमे नंबर दीटा को ऐड करिवि. एटी मोर इनपुट रहिला दीटा नंबर, आ गोटे इनपुट रहिला प्लस सिंबल, इक्वल सिंबल है हमर प्रोसेसिंग. देन ऑब्टेनिंग द जूस ऑफ ए फ्रूट यूजिंग जूसर मशीन. हमें जूस टा बाहर करिवा यूजिंग जूसर मशीन. तो हमर इनपुट टा रहइबो कोन ना हमर धर हमें मैंगो जूस बाहर करिवा, मैंगो टा हला हमर इनपुट, ग्राइंडिंग जोटा हबो सेटा को आजिवो प्रोसेसिंग, तापरे से हमको आउटपुट टा जनरेट करिवो मैंगो जूस दबो. बुझिला. तार बेकिंग ब्रेड, ओके हमें तो ब्रेड बनेवा जो हमें कहि परिवा एटा नबा जो बेकिंग सोडा, खाइबा सोडा नबा, से सोडा थ्रू रे हमर कोन होबो ना हमर तापरे ताको हमें ओवन रे पकेवा, चीनी पकेवा, एटा पकेला परे हमर केक टा प्रिपेयर रहउचे. वॉशिंग क्लॉथ्स इन ए वॉशिंग मशीन. आमे जते बेले वॉशिंग मशीन रे कपड़ा धोइबा तो हमर डिटर्जेंट जोटा रहउची, ओके सो डिटर्जेंट टा होची हमर जो डर्टी क्लॉथ होची हमर इनपुट. तापरे हमर प्रोसेसिंग करिवा कोन डिटर्जेंट सेठी पकेवा, डिटर्जेंट पकेला परे सेटा प्रोसेसिंग हबो, तापरे मते से आउटपुट दबो. आउटपुट टा हमर कोन हबो ना क्लीन क्लॉथ्स, माने भलो कपड़ा मते से दबो. बुझिला. The solution is what? Calculating the sum of two number using calculator. The first input is first number, then we're using second number, then process is calculation of the number. So this is called as what? When you calculating or adding a two number, dita number add करिया पयले प्रथम मु input ने भी first number, तापरे second number ने भी, तापरे प्लस सिंबल होची मोर इनपुट, देन प्रोसेस हला कैलकुलेशन ऑफ द सम, देन आउटपुट हला सम ऑफ द टू नंबर. देन ऑब्टेनिंग द जूस ऑफ ए फ्रूट यूजिंग ए जूसर मशीन. तो जूसर मशीन रे रहइबो फ्रूट टा हबो हमर इनपुट, एक्सट्रैक्शन ऑफ द जूस हला प्रोसेसिंग, आउटपुट हला जूस ऑफ द फ्रूट.
तो ए सब जिनस आमे यूज करूचे द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सो कंप्यूटर डजंट वर्क बाय इटसेल्फ कंप्यूटर मनु को मन से काम करिवनी कंप्यूटर को काम करिवा कहले आमे ताको इंस्ट्रक्शन दवा को पड़िवो अच्छा आमे जो इंस्ट्रक्शन दवा तो कंप्यूटर कण आमर लैंग्वेज जानिछि कंप्यूटर का इंग्लिश जानिछि ना ओडिया जानिछि ना हिंदी जानिछि the computer doesn't know any kind of language okay so computer only doesn't know any kind of language the computer only know the 0 and 1 format ame इंग्लिश रे कथा होचे ओडिया रे कथा होचे हिंदी रे कथा होचे the computer के आज it is a electronic device it is only know the 0 and 1 format ए केवल 0 और 1 format ही जानि छी बुझियला आज्ञा सेति पई कोन हबो ना हमें जहां भी इंस्ट्रक्शन दबा कंप्यूटर को से ताको 0 और 1 ने कन्वर्ट करिवो तो से जो इंस्ट्रक्शन दबा सेति पई हमें यूज करिवा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज the programming language is used for converting what you can say हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को से मशीन लैंग्वेज रे कन्वर्ट करिवो 0 और 1 फॉर्मेट रे कन्वर्ट करिवो ओके सो प्रोग्राम नीड्स टू बी रिटन इन ए स्पेसिफिक लैंग्वेज कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें जते बेले कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दबा हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्रू रे हम इंस्ट्रक्शन दबा से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किछि हमें गोटे पर्टिकुलर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हमें जो दबा पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करी करबा सेटा सी हेई पारे C++ हेई पारे जावा हेई पारे सो एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू कैन यूज बुझला ए कंप्यूटर यूजेस द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू परफॉर्म एनी टास्क द कंप्यूटर इज डिजाइन टू एक्सेप्ट द इनपुट कंप्यूटर कोन करबा इनपुट को एक्सेप्ट करबा process the input then generate the output it is a normal work the computer जो भी work perform करे एटा तीनटा cycle ला perform करे input process another is output so that you whenever you are giving a instruction to the computer the kind of input that you are provided that kind of output you are expected माने मते जदी मैंगो जूस पाइबार अछि तोर मोर इनपुट ता कोन हबो मैंगो हितिबा दरकार ताले मु मैंगो जूस ता पाई परिबी आ जदी मोर इनपुट ता मैंगो हि नथिबो ताले मु मैंगो जूस पाइबेनी the kind of input that will be provided the processing that needs to be done and the kind of output that you are expected okay so eta hochi amara you need to provide a set of instruction that specify the kind of input that will be provided processing that needs to be done and the kind of output that you have to expected instruction in a program can be of three types one is sequential another is decision making next is iterative so when you are providing the instruction your instruction will be of three types say instruction ta kon hithibo ना sequential हेतिबो it may be a decision making and it may be a iterative your program is a sequential it may be a decision making and it is called as a iterative so it is the what way of representing your instruction okay गोटे देखिबो जते बेले आमे मेसेज पठेबा मोबाइल लो से कहबो ओपन द मेसेज बॉक्स type in the type field add the contact then send the information or send the message eta la sequential decision making केते बेला आसीबो ना जते बेला हमें कोनोसी फाइल टा को डिलीट करबा को चाहूतिबा से हमको पचारिबो डू यू वांट टू रिमूव द फाइल and yes or no question पचारिबो so that is called the decision making next हमें कहबा iterative is called as a repetitive process माने स्टेटमेंट गोटे स्टेटमेंट को जदी हमें मोर देन वन टाइम हमें एग्जीक्यूट करबा को चाहूतिबा सेटा को हमें कहबा iterative
ओके बा लुपिंग स्टेटमेंट आम कह जदि मुझे तुमको कहि तुम 20टा सांगंकर इनफॉरमेशन तुम स्टोर कर ओके 20टा सांगंकर डाटा नियो तो गोटे सांगर धर तुम 3टा डाटा नौच 20टा सांग हेले तुम केतरा नब दैट विल यू हैव टू टेक द 60 इनफॉरमेशन 60टा मते इनफॉरमेशन नबा को पड़िबो तो व्हिच इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एटा बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहिबो सेतिपाई कौन हुए ना मु कौन यूज करी ना थरे ही लिखी आउ से जिनसटा को मु 20 थर रिपीट करी ताले कौन हम मोर जो 60 लाइन्स ऑफ लाइन लिखिबार थिला आउ लिखिया पड़ोनी तो 3 थर लिखी ताको जदि मु 20 थर रिपीट करी ऑटोमेटिक कौन हम ना मु सेही आउटपुटटा पाई परिबी तो मोर टाइम भी सेव होला 57टा लाइन आउ लिखिबा को पड़िबो नै बुझियला Yeah. So next is a computer system uses the collection of the binary digit that is 0, 1 to represent the data and instruction which is called as machine language code. For example, whatever the instruction you are passing to the computer, it is only converted to the 0 and 1 format. It is converted to the 0 and 1 format. For example, like if you pass the plus symbol, then the computer is converted this plus symbol to which format? To the this format 1 0 1 4 0 1 00. So it is converted into this format. When you write minus, then it is converted to this format. Okay, so it's just like you can say the computer, what are the instruction you are given, it is converted into this 0 and 1 format 1 0 format. So it is very difficult for anybody to remember the instruction in the form of machine language code. So therefore we use high level programming language to write the program. So high level programming language is a language which is used to pass the instruction to the computer and which is converted into the 0 and 1 format. Next is a high level programming language consists of set of instructions which are represented using simple English words. There are many high level programming languages are available such as C, C++ and Java. Each language has a vocabulary and grammar. Every language is having its own vocabulary and grammar. Grammar means like when you are writing a English is having a grammar. When you write a Odia is having a grammar. So when you write a programming language, every programming language is contain some kind of word, a set of instruction that instruction you write and you go ahead. But can a computer understand the instruction written in a particular programming language? The computer doesn't understand the instruction written in particular programming language. To solve this problem, a special language called as compiler is used. The compiler is converting the programming language into the machine language. The programming language को machine language से convert करियो. That is the work of a compiler. Compiler process the statement written in particular programming language and convert it into the machine language. जेमते कि when the prime minister is going to the foreign, he is giving speech in Hindi, and lot of peoples are coming from the different location and different country. They able to understand what is supposed to be or he wants to be speak. So that is called as what? Other person cannot know the Hindi, but there is a translator is present which is converting this programming language into the machine language. The process of
Translating the programming language code into the machine language's code is called as the compilation. The compilation is the process which is used for converting programming language into the machine language. Excuse me. Like when you add a number a add b, okay, and it gives you the result c. So in between, these are the numbers or machine codes are generated, which is not understand by the what human. Okay, so they only know this kind of language like a add b equals c. So it is a machine language that we're using. Okay, then tell me, a dash is a special program that convert the programming language into the machine language. Kuda hava? Three compiler. Compiler. Good. The next part, so here we have to learn about the various tools for problem solving technique. The tools that you can use to solve a particular problem, that we're using algorithm, flowchart, and pseudocode. Okay, so these are the three things we are using: algorithm, flowchart, and pseudocode, which is used to solve a particular problem. To solve a particular problem, we are using three parts. One is algorithm, next is flowchart, another is pseudocode. Okay, it is the three way which is used to solve a problem. Algorithm is what? Algorithm is a sequence of steps required to solve a problem. Okay, it is a sequence of steps required to solve a problem. The characteristics of algorithm is what? Algorithm ends after the fixed number of steps. After a fixed number of steps, algorithm ends. Each step in the algorithm clearly specifies the action to be performed. So in every step, it defines what to do. So it is defined that in every step by step, it is defined what is your next course of action. The steps in the algorithm specify the basic operation. These operation can include calculation like input output operation and comparison. Okay, so in every step, it is include the calculation part, input output and operation part and comparison part. Algorithm accept the input data in a defined format.
ओके एटी देख कौन हो ए algorithm ends after fixed number of step सपोज आमे जदि कहवा हाउ टू मेकिंग ए टी तो आमे कहवा चा चा बनैया पे हेले हमको फास्ट पानी गरम करिया पड़िबो तापर मु चीनी पकेबी क्षीर पकेबी चा पत्ती पकेबी तापर फुटेबी तापर मो चाटा प्रिपेयर हो चा को छाणीबी आसी गला सो आई एम टेलिंग द 6 to 7 step to perform or to make the tea. The algorithm is just like that. It is ends after the fixed number of steps. Each step in the algorithm clearly specify the action to be performed. मु फास्ट कौन कहली ना पानी नवा पानी को गरम करिवा so in every step it is saying you what you have to perform. The steps in the algorithm specify the basic operation. These operations can include calculation, input output operation and comparison. Algorithm accept the input data in a defined format. हमें जो यूजर ठारू जो input नवा okay so that input you have to take in a defined format. You have to take as a defined format. जेमते कि हमें जते बड़ा बाजार को जीवा परिवा आनिवा so that we take a bag गोटे बैग नहीं जीवा पड़ियो एंड मुझे तो पेट्रोल आने को जीवी बैग रे पकई तो पेट्रोल तदरे आसीबनी मुझे तो बॉटल नहीं जीवा पड़ियो तो जो जिंस आनिवा से जिंस को आनिवा पे हमको गोटे पर्टिकुलर कंटेनर दरकार पड़ियो so algorithm accept that input data in a defined format before it can be processed and algorithm generate one or more output गोटे algorithm one or more output generate करिवो. The resultant information term as output can be displayed and stored in the future reference. An algorithm follow the IPO cycle to solve a problem. It follow the IPO cycle to solve a problem. So that is called as the what? Algorithm. माने फास्ट हमरा इंपुट नउची तापर प्रोसेसिंग करूची तापर मते आउटपुट जनरेट करूची बुझियला एते की जाय अम्य ଆଜ୍ଞା बुझी पारे तो स्टेप्स गुड़ाक ସେ କହିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ମାନେ algorithm is ends after a fixed number of step हाँ जो fixed number फिक्स ସେ नंबर fixed number ମାନେ କଣ आमे जेता कहवा आमे धर चा बनेबा पे गोटे फिक्स नंबर स्टेप रहउची कि फास्ट पानी नवा पानी गरम करवा दीटा स्टेप रहिला चीनी पकेवा क्षीर पकेवा तापर चा पत्ती पकेवा 5 नंबर स्टेप रहिला तापर फुटेवा 6 छाणीबा 7 तापर दबा चाटा केते रहिला 8टा नंबर ऑफ स्टेप रे मो चाटा हे जाउ चाटा मु जण को दे दउ so every algorithm ଆଜ୍ଞା ends in a fixed number of steps yes or no ଆଜ୍ଞା so that is called as what you can say it is a ends after the fixed number of steps okay ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ପॉइंट ଅଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ବୁଝିଲା ତ ଏତିକି ଆଜ୍ଞା so it is a representation of algorithm for example to withdraw the required amount from the ATM okay ATM रो मु किछि पैसा बाहर करिया चाहूची तो केमती फॉलो करिवि ना स्टार्ट द algorithm then जेतले algorithm हमें स्टार्ट करिवा लेखा हबो स्टार्ट द algorithm जेतले एंड हबो लेखा हबो एंड द algorithm insert your ATM card insert करिवा ATM machine check your card detail ATM machine मोर card detail check करिवो enter the pin number मो pin number एठी enter करिवि ATM machine validate the pin number को से validate करिवो press cash with receipt button गोटे कैश आउ रिसीव बटन थिवो तापर मु यूज करबी सिलेक्ट द अमाउंट यू वांट टू विथड्रॉ केते अमाउंट ता मु विथड्रॉ करबी लिखिबी कलेक्ट योर एटीएम कार्ड ता मु कलेक्ट करबी ATM machine count the cash
collect amount from ATM machine, then collect your statement for the ATM machine, then And algorithm. end of your algorithm. ବୁଝିଲା ମାନେ 12ଟା step ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ATM ରୁ ମୁଁ ପଇସା କାଢି ପାରୁଛି ବୁଝିଲା Yeah. consider another algorithm to display the product of two numbers. First start the algorithm, accept the first number, accept the second number, then multiply the two number, display the result, then end of your algorithm. तो फास्ट मु कौन करी algorithm टा स्टार्ट करी फर्स्ट नंबर एक्सेप्ट करी देन सेकेंड नंबर एक्सेप्ट करी देन दीटा नंबर को मु मल्टीप्लाई करी गोटे रिजल्ट डिस्प्ले करी एंड ऑफ द algorithm टा एंड ऑफ दैट इज द steps of algorithm to find out the product of two number बुझेला Yeah. तापर मु लिखि परिबी the algorithm can also be written in the following manner मु को मैनर लिखि परिबी start the algorithm let a b and product be the three number तीनटा नंबर ने भी ओके गोटे होची दीटा नंबर पई a and b देन मु नेबी कोन आ गोटे वैल्यू नेबी जोड़ी मो रिजल्ट शो करिवे so three number I have taken one is start the algorithm let a and b product are the three number accept the value of a accept the value of b product equals to a into b then display product end of your algorithm तो एटा टिके आउ टिके टेक्निकल वे रे मु नेली फास्ट मु कोन करबी ना स्टार्ट कली a and b three number नेली a and b product three number accept the value of a value टाको मु accept कली accept the value of b then product equals to a into b then मु display कली product then end of your algorithm बुझेला अमिया बुझ पाइलो Again. in the preceding algorithm a b and product are the variable a b and product are the variable they are called variable because the value contained in them is not fixed हमें जो वैल्यू टा स्टोर करिवा ए वैल्यू टा फिक्स नुहे okay in the statement the product a into b okay and equal a b is called as the operand plus is called as the operator equal is called as the assignment operator it assign the result I would example hala consider the another example of an algorithm to increment a given number by 1 so we have to increment a number गोटे नंबर को हमें इंक्रीमेंट करिवा let n be the number हमें गोटे नंबर नबा n accept the value of n हमें गोटे वैल्यू नबा ताको दबा कोन ना एटा गोटे वैल्यू नेले accept the value of n is equals to n plus 1 then display n end of the algorithm ना हमें गोटे algorithm start कले देन हमें एक्सेप्ट कले वैल्यू टाको तापर से वैल्यू रे 1 टा ऐड कले तापर हमें कोन कले ना से वैल्यू रे 1 ऐड कला पर एठी डिस्प्ले कला पर Display. से हमको देखेला कोन And, एंड ऑफ द algorithm बुझला algorithm.
ओके तो आम नेक्स्ट क्लास रे एटा एल्गोरिथम गला नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा फ्लो चार्ट टा कोन आ सुडो कोड जोडा अछि सेटा कोन बुझिला आज्ञा बुझिला तो पढ़ा आज्ञा अच्छा तुम्हें को समय फ्री रहउछ